With time we have to upgrade our skill to settle down with new opportunities like web development, app development. इसके साथ साथ हमें ये भी सीखना होगा किस तरीके से इसे हम क्लाउड पे डिप्लॉय करते हैं. Now in this video I will going to tell you about what is AWS, about its salary in India, its demand in India, and the important thing how you can learn AWS for free. So be with me till the end of this video. You will get to know everything about AWS. So before going ahead, make sure you like the video and subscribe the channel. So start करते हैं वीडियो को. Let's go. Let's understand the concept of cloud computing with an example. You know about Google Drive, right? So what is the use of Google Drive? So basically you use Google Drive for storage purpose like storing videos, photos or documents or anything you want to store. It is free to use up to 15 GB. After 15 GB you have to pay some amount. But the special thing about Google Drive is you don't have to bother about the security of your data. You don't have to bother about the management of your data you store on Google Drive. जितनी भी चीजें हैं वो Google Drive खुद मैनेज करता है. इवन ये मोबाइल गेट डैमेज और किसी तरीके से टूट जाता है डिवाइस आपका, लेकिन फिर भी आपका प्रीशियस डेटा आपके पास रहेगा. You just need to remember Google ID and password and that's it. You can back up your data on any device. But in the case of pen drive is also used for storage purpose. जैसे कि आप फोटोज वीडियो स्टोर करते हैं. But in pen drive there is lots of problem. There is no security in pen drive. कोई भी pen drive को अपने लैपटॉप में लगा सकता है, वो सारे डेटा को देख सकता है और डिलीट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है. And 16 GB pen drive खरीदने के लिए आपको 400-500 रुपए देना पड़ता है. So this is costlier than Google Drive. And if somehow your pen drive get damaged और किसी तरीके से खो जाती है तो आपका डेटा भी चला जाएगा. So if we talk about what is good for you, so obviously Google Drive is best and Google Drive is based on cloud storage. And in similar way AWS works. Suppose you made a website and buy a server. It can handle user up to 100 and if somehow it limit cross to 500 or something more than 100, so your server get down and you have to manage. कोई भी यूजर उसे एक्सेस नहीं कर सकता. Basically ये चीजें एग्जाम टाइम पे होती हैं. And now you buy a server limit up to 1000 user. But in general there is 20 to 30 user visit on your website. तो यहाँ पे आपका remaining server बर्बाद हो जाएगा and your money got wasted. But it will not happen in AWS. AWS is basically flexible in nature. AWS can adjust itself according to the need of user. अगर सर्वर का यूजर की नीड ज्यादा होती है तो AWS अपने आप ज्यादा में एडजस्ट हो जाएगा. अगर सर्वर पे बहुत कम यूजर विजिट हो रहे हैं तो AWS अपने आप को कम की ओर एडजस्ट कर लेगा. सो द बेस्ट थिंग अबाउट AWS दैट यू हैव टू पे द अमाउंट अकॉर्डिंग टू द यूजर. सो पर आवर बेसिस पे ये चार्ज करते हैं. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट AWS दैट कंपनी डू नॉट बोदर अबाउट द सिक्योरिटी, अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ सर्वर. बट इन प्रीवियस अगर कंपनी कोई लोकल सर्वर खरीदती है वहाँ पे सर्वर को भी मैनेज करने के लिए आपको टीम चाहिए होती है और वहाँ पे सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना पड़ता है. बट इन द केस ऑफ AWS मैनेज एवरीथिंग बाय इटसेल्फ. सो दिस इज व्हाई कंपनी वांट्स क्लाउड कंप्यूटिंग. And if we talk about the most trending cloud computing in the market, that is AWS. AWS have 39% cloud computing market और AWS की यहाँ पे नीड भी है. जैसे कि आप IoT हो गया, ML हो गया, मशीन रोबोटिक्स हो गया. So these are the technologies that enhance the existing technology. But AWS एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसकी एक्चुअल में नीड है. So now let's talk about the average salary of AWS. So the lowest salary is about 3 lakh per annum and the highest salary it can go up to 10 lakh per annum. And the average salary of AWS in India is about 6 lakh per annum. That only depend on your knowledge and experience. And salary can vary according to your role also. तो जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे रोल होते हैं AWS अलग अलग तरीके के. आप AWS में बन सकते हो, DevOps इंजीनियर बन सकते हो, आप डेवलपर बन सकते हो. सो बहुत सारी चीजें यहाँ पे हैं. We will discuss it later. So now let's talk about how you can learn AWS for free. So AWS website itself provide a free learning platform. You can learn AWS on its website itself. AWS website पे आप खुद AWS सीख सकते हो. So just search AWS on your browser and click the very first website. Now click learn. So यहाँ पे आप देख सकते हो there is a bunch of thing. Introduction to AWS, getting started with AWS, training and certification. So just click AWS fundamental if you want to learn about AWS fundamental. You can click AWS fundamental. Yeah, video and articles you can read. If you click on a hands-on tutorial, you will get bunch of articles. You can read articles, you can learn about AWS 10 minutes, 8 hours, 20 minutes. And if you want to enroll in your digital learning platform, you can click on AWS training. After getting in AWS training, you will get explore digital training or explore classroom training. So basically you will click AWS digital training. So now here you can learn AWS cloud practitioner for free fundamentals. You can enroll here for free. After getting sign in, you can enroll for AWS cloud practitioner. So basically these are the free resources through which you can learn AWS. And you can also explore some YouTube channel through which you can also learn about AWS. So I'll provide each link in the description. You can check it out. So यहाँ पे एक चैनल आता है टेक्निकल गुरु टू गो on which you can learn AWS. You can also explore some YouTube channel by yourself which channel is best. And if you want to know more about AWS, you can follow Tech with Lucy YouTube channel. Now let's talk about the AWS exam and certificate program. So I will provide the link in the description. You just click on the link, you will redirect to this page. So there is a 12 certificate of AWS. तो सबसे पहला है फाउंडेशनल एंड उसके बाद एसोसिएट है, इसके बाद स्पेशलिटी है एंड इसके बाद
डेटाबेस बहुत सारी सर्टिफिकेट आप देख सकते हो, 12 सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको मिलेंगे। एंड देयर इज आल्सो एग्जाम प्राइस, यू हैव टू पे $100 फॉर फंडामेंटल्स एंड $150 फॉर एसोसिएट एंड $300 फॉर स्पेशलिटी। सो बेसिकली यहाँ पे ऑलमोस्ट 8,000 का फंडामेंटल पड़ेगा आपको एंड 22,000 का आपको पड़ेगा स्पेशलिटी। एडवांस नेटवर्किंग हो गया, डेटा एनालिटिक्स हो गया, डेटाबेस हो गया, मशीन लर्निंग, सिक्योरिटी। सो बेसिकली दीज आर द सर्टिफिकेट्स ऑफ AWS। यू कैन गेट एनी ऑफ द सर्टिफिकेट आफ्टर पासिंग द एग्जाम्स। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।